In the last class, we have finished the topic tracing of parabola. Next topic we have tracing of central conics, uh, ellipse and hyperbola. For that, we have this article, length and position of the axis of the conic ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. So this is the central conic. I'm taking this particular equation, central conic. Firstly, I will find length and position for this case. So suppose you have ellipse means any central conic. I am representing by this conic like this, but it is any central conic. So let the equation of the central conic is a once again B1. Now consider the concentric circle. I will take a circle whose center is the center of the central conic, whatever the central conic. Circle x square plus y square is equal to r square. ठीक, ये हमने एक सर्किल लिया जिसका सेंटर यही है. If I am taking this, suppose by this, so this is your circle. The circle will be like this. This blue color is a circle. सर्कल प्लॉट करेंगे क्योंकि मेजर एक्सिस दे रहा है, तो मेजर एक्सिस अब यू विल टेक, इट विल बी कमिंग इनसाइड लाइक दिस. Suppose it is coming like this. Okay, this is a circle. X square plus y square is equal to r square. This is your equation 1. The circle will be intersecting at 4 points. Because centers are same, so I can take diameter like this. I can join these points and these points also, passing through a line. These two are the chords passing through the center. Center is O, and this will be intersecting A, B, C, D. This is the consideration. सर क्या लिखा आपने सर? कंसीडर द कोसेंट्रिक सर्कल. Yes, concentric circle. Okay. सर व्हाट इज कोसेंट्रिक सर्कल? कोसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर और इस सेंट्रल कोनिक का सेंटर सेम है, उसी सेंटर पर एक सर्कल ड्रॉ करा. ठीक है, ओके. ये सेंट्रल कोनिक है तो इसका कुछ सेंटर होगा, जैसे एलिप्स है या हाइपरबोला, इनके सेंटर ओरिजिन लेता हूं मैं, वही स्टैंडर्ड है. उसी सेंटर पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया. तो कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब सेंटर ऑफ द कोनिक 1 एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेम. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ थोड़ा अरेंज करके. आई कैन राइट इट ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2. Now this circle meets the conic 1. This 2 meets 1 at 4 points. You can see here A, B, C, D. 4 points पे ये meet कर रहा है. So equation of the pair of straight lines
equation of the pair of straight lines joining the origin to the intersection of 1 and 2. Means joining the origin to, you can say A comma C and B comma D. इनको ज्वाइन करने वाली अगर हम टू लाइंस ले तो देयर विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी गिवन बाय क्या करेंगे इसमें वन की जगह पे ये रख के इसे होमोजेनियस बना लेते हैं. इट इज द वे टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय दिस 1 and 2. So I can write ax square plus 2hxy plus by square. Take -1 on the left hand side and put the value of -1. So square plus y square upon r square is equal to 0. It is called making homogeneous. हमने क्या किया, वन को homogeneous बना लिया, making equation 1 homogeneous with the help of 2. So it will be representing the pair of straight lines. Or I can arrange the terms of x square and y square. So you can write x square is a minus 1 by r square plus 2hxy plus y square common. So from this term b square minus 1 upon r square is equal to 0. ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 3 पुट करो. है ना. Now when they will be coinciding, अगर मैं कहूँ आपसे कि ए बी और सी डी कब कोइंसाइड करेंगी, when they will be along x एक्सिस, है ना. जब ये ए बी ए सी और बी डी क्या हो जाए, या तो along y एक्सिस आ जाए दोनों, तब कोइंसाइड करेगी, या क्या हो जाए along x एक्सिस आ जाए, तो ये तो कोइंसाइड करेंगी. देखिए अगर मैं इसे रोटेट करूंगा तो दे विल बी कोइंसाइडिंग when they are along the axis. So these lines will coincide in case then. So these lines will coincide in case when they lie along x axis or y axis. तो ये क्या है, that means axis of the cone. ये कोनिक की एक्सिस है. जैसे अगर ये इलिप्स होता तो ये आपकी मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस. तो कब कोइंसाइड करेगी, व्हेन यू कैन सी, व्हेन यू कैन स्टार्ट मूविंग और ये ए बी ए सी भी इसके पैरेलल आ जाए इसके ऊपर, या ये ए सी आ जाएगा बी डी भी जाएगा. एंड दैट केस क्या होगा, सर्किल एंड कोनिक विल बी टचिंग ईच अदर, है ना. सर्किल और कोनिक क्या करेंगे, टच करेंगे उस केस में, क्रॉस नहीं करेंगे. अगर ये आपके पास जो इसकी डायमीटर यहाँ आ गई तो क्या होगा उस केस में, दे विल बी टचिंग. ठीक है, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा. तो फॉर दैट केस, फॉर द सर्किल एंड द कोनिक
will then touch each other. Okay, so these diameters will be coincident if the diameter of the circle be equal to the length of the either axis. So they will be coincident if so this the pair of lines, that means the pair of lines will be coincident if ये pair of lines क्या है, ये diameters है ना, they are the diameters. So pair of lines will be coincident if h square is equal to ab. देखिए ये डायमीटर से ये कोइंसिडेंट हो जाएंगी, तो कोइंसिडेंट में क्या होगा, दे विल बी टचिंग टू ईच अदर. और पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होती है, फॉर अ पैरेलल लाइंस, अगर ये दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. नाउ इफ दे आर पैरेलल तो क्या होगा, एच स्क्वायर शुड इक्वल टू ए बी, है ना. दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस. अभी equation 3 was representing two lines AC and BT. Now what I did, I take a case when this is touching the axis. उस केस में वो क्या होगा, उस केस में they will become parallel. Okay, so in that case for the parallel line the condition is h square should equal to AB. तो यहाँ पर h square तो h square ही है, and AB is coefficient of x square and y square. So a minus 1 upon r square, b minus 1 upon r square. Or you can say, if I will write it after solving, so you can find 1 upon r4 minus 1 upon r square a plus b plus ab minus h square is equal to 0. ऐसे सॉल्व कर दो, या अगर r4 से मल्टीप्लाई कर दो, I can write r4 ab minus h square minus r square a plus b plus 1 is equal to 0. Am I audible? Yes, sir. So you got a condition for a condition of parallel lines. इससे I got a equation in R4. So it is basically what? It is quadratic in R square. है ना, इसे हम क्या कहेंगे? Which is quadratic in R square. अगर इक्वेशन नंबर 4 कर दो, ये है R की पावर 4 में. देखिए अगर मैं R स्क्वायर को x मान लूँ या R स्क्वायर को कुछ हम s मान ले तो क्या हो जाएगा, ये s square ab minus h square minus s a plus b plus 1. So this is quadratic in R square, I can say, which is quadratic in R square. R square में लिख रहा होगा. पावर 4 को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम R स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं. So if it is quadratic in R square, it will be having two roots, है ना. Suppose R1 square and R2 square, which is quadratic in R square and has two roots, at most two roots, R1 square and R2 square. स्क्वायर में चल रही, ध्यान रखना, इसके टू रूट्स होंगे, है ना. अब there are different cases. If both roots are positive, then conic is an ellipse. इसमें different cases होंगे. If roots are, यहाँ पे आप लिख सकते हैं cases है, इसी में लिख दें या केस डाल के लिख सकते हैं. If both the roots are positive, suppose if
फर्स्ट अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, इफ बोथ द रूट्स r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर आर पॉजिटिव, अब यहाँ पे r1 स्क्वायर लिया है, लेकिन यहाँ पे ये डोंट थिंक इट इज स्क्वायर, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव है ना। r1 स्क्वायर है, बट r1 स्क्वायर को बेसिकली मैं क्या समझ रहा हूँ, इट इज सम s, क्योंकि इट्स अ रूट ऑफ r स्क्वायर। सो इफ बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, then equation 1 represents an ellipse. An ellipse, अगर ये रूट्स पॉजिटिव है, and the length of the semi axis will be r1 and r2। ये लेंथ आएगी सेमी एक्सिस की, क्योंकि स्क्वायर होता है आपके पास। सो लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस विल बी r1 and r2, है ना, सेमी एक्सिस की जो मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं। अब अगर r1 ग्रेटर देन r2 है, तो r1 विल बी सेमी मेजर एक्सिस, r2 विल बी सेमी माइनर एक्सिस। जो ग्रेटर होगा वो मेजर एक्सिस बन जाएगा ना, यू नो दैट थिंग। सेकंड केस इज पॉसिबल if both the values are of opposite sign, when both the values of r1 square and r2 square are of opposite sign, मीन्स एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव, उस केस पे इट विल रिप्रेजेंट्स hyperbola, then one represents a hyperbola, and r1 r2 will be the length of semi transverse and semi conjugate axis। r1 and r2 will be the length of semi transverse axis and semi conjugate axis। ओके, ये तो एक आपके पास इससे ऑब्जर्वेशन आएगा। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इन फैक्ट, सो व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस? So for the equations of the axis, I will multiply equation of the axis. So multiplying equation 3 by a minus 1 by r square, इस टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया, we get this is equation 3, जो पेयर ऑफ इसमें a minus 1 by r square से मल्टीप्लाई किया, तो what will happen, you will be getting a minus 1 by r square whole square x square plus 2h a minus 1 by r square xy plus a minus 1 by r square b minus 1 by r square y square is equal to 0। ठीक है, ये टर्म एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा। इससे क्या होगा, इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अभी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस व्हाट इज दिस थिंग, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से यू हैव नहीं इससे, हाँ इट वाज व्हाट, इट वाज योर एच स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू की थी एच स्क्वायर की, सो दिस टर्म आई कैन राइट एच स्क्वायर, सो इट विल बिकम a minus 1 by r square whole square x square plus 2h a minus 1 by r square and xy plus h square y square is equal to 0, है ना। ये फ्रॉम 4 यू कैन से, 4 से इससे
because they representing pair of parallel lines. Is now it is what? This is actually your perfect square. This is a minus 1 by r square x. इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था. I want to make it perfect square plus hy whole square is equal to 0. And if whole square is equal to 0, I can write a minus 1 by r square x plus hy is equal to 0. ठीक है, इक्वेशन मिल गया आपको, which is 5. Now you know r square. R square की यहाँ पास 2 possibilities है. R square may be r1 square, it may be r2 square. 2 possibilities are there. So substituting this r1 square and r2 square, I can write